बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको जो टॉपिक लेके आया हूँ वो है ट्रांसपेरेंट लॉगिन फॉर्म का। इसमें देखें, इसमें आइकन्स भी हैं जिसमें ईमेल का और लॉग का आइकन है। उसके बाद इसके अंदर आप अगर डाटा फिल करेंगे तो इसके अंदर एक बहुत ही एनिमेशन सा लुक भी आएगा और उसके साथ इसके अंदर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगी हुई हैं जो कि आप जब तक फॉर्म फिल नहीं करेंगे आप इसको फॉर्म आगे आपको स्टार्ट नहीं करेगा, आपको अगले पेज पे लॉगिन नहीं करेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का ट्यूटोरियल। उम्मीद आपको पसंद आएगा। सबसे पहले हमें जिन चीज़ की ज़रूरत है वो दो फाइल्स हैं। एक CSS की फ़ाइल है, दूसरी HTML की फ़ाइल है और एक बैकग्राउंड इमेज चाहिए होगी हमें। ये बेसिक HTML का कोड है। उसके बाद ये CSS की फ़ाइल है जो कि बेसिक कोड है इसका टाइटल दिया। और अभी हम स्टार्ट करते हैं अपना कोड। सबसे पहले जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है सेक्शन। मैं एक सेक्शन क्रिएट करूँगा, इसी सेक्शन के अंदर हम सारा काम करेंगे। नाउ आई कैन ऐड one div. The div name, class name is form box. Now I can add another div. The class name is form value, and again we have form because we have type a two input box file. First h2 login, ये हेडिंग होती है। आप किसी भी चीज़ की हेडिंग करने के लिए आप h2 h3 h1 का इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउ one word div, the class name is input box, and then input type, the type is email, and remove this code and type the required field, क्योंकि जब हम यहाँ पे रिक्वायर्ड करेंगे तो आपको जब वो आपसे रिस्ट्रिक्शन लगाएगा, जब तक आप इसको पुट नहीं करेंगे आपको आगे नहीं जाने देगा। नाउ आई कैन ऐड अ लेबल फॉर अ ईमेल and one input field is complete. Now we can copy this code and replace and paste it here and change some code here. Type password and email to replace a password label. Okay, one more div, the class name is forget. यहाँ पे एक हम लेबल लेंगे, लेबल फॉर इनपुट टाइप चेक बॉक्स, क्योंकि रिमेंबर मी का भी हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं तो रिमेंबर मी के लिए हम चेक बॉक्स का बॉक्स एंड देन टाइप हियर रिमेंबर मी and after that we have a tag for forget password. Type here forget password, क्योंकि जब आपको पासवर्ड भूल जाते हैं तो आप जब क्लिक करेंगे तो न्यू विंडो के लिए एक न्यू मेरा HTML की फ़ाइल के लिए हम यहाँ पे ये चीज़ यूज़ कर रहे हैं। ओके, नाउ वी कैन ऐड अ बटन फॉर द लॉगिन button. The button name is login and the last div, the class is register. If you don't have an account then you click a register button for your register page. Okay, a tag. First of all we have the p paragraph or don't have a account. Here and type here register. Okay, now I want to show you
This is our inputs field and login, heading and forget password, and button login, and then don't have an account, you click the register button to move your next page. Okay, one more thing, we had a two label icon for the input और पासवर्ड। ये एक वेबसाइट है, मैं आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। यू कैन जस्ट copy this code and go to your HTML file and then the selection code and paste it here, this code. Okay, now you can again move back to your website, icons, and search the icon mail. First you can type here email or mail, click here to email box and copy this one line code and go back to the input class and paste it, the copy code is here for the icon. Now come back to again your web page and search lock and click the lock icon and copy this code and move back to HTML file and again paste it here for input box. If I repeat, now you can see the email and log icon is appear to the website. Okay, the HTML code is complete now. Now we can go to CSS file for the style. First of all, we can copy the section class. The section is first. We are going to section. Display flicks. Justify content center. Align atom. Align atom center. Main width 100 pixel 100% and width 100%. Background, you can choose any other color. I can choose a blue color first. Background position, center, and background size. Cover. Now I can show you what's the change of our website. Refresh the page. What happened? Okay, let me check. Oh, I'm sorry, we are not linked our CSS file. Now you can type a link and type here style.css. Now refresh again, you can see the background is changed. Now come back to the HTML file and form box div class copy, and now you can style here position relative
width 400 pixel, height 450 pixel, background, first of all border radius 20 pixel, display flex, justify content center, align item center. Now you can refresh the page. Now all things is in center on the page. Now background is green. Now it's look like it's very beautiful. Now we have H2 for the heading, font size 2 em, color white, and text align center. Now you can see okay. Input box position relative, margin left and right 30 pixel and 0 pixel, with 310 pixel, and border bottom 2 pixel, solid and color white. Now we have input label, the class name first, then subclass name, position, absolute, top 50 pixel, left 5 pixel, transform translate 5 minus 50 pixel, color white, font size 1 em, 0.81 stone, and transaction minus 50 pixel again. Now you can see refresh the page. When we click here, the input field is like good. Now we are going to CSS file, input, focus, copy this code and paste it here for the value, and top minus 50 pixel, 5 pixel, sorry. Now you can see when I click that, the label is going top minus 5 pixel. Now come back to again CSS file, and class name dot input box and subclass input with 100%, height 50 pixel, background transparent, border none, outline none, font size 1 em, padding 0, 35 pixel, left 0 and 5 pixel, and color white. Now refresh the website. You can see the input boxes look like cool. Okay, input box class name, the subclass IUN icon,
copy this class name because when just write spelling here, if you don't, the spelling is mistake. Style position absolute, right 8 pixel, color white, font size 1.2 em, and top 20 pixel, 2 pixel. Okay, now we will copy the forget class and come back to CSS file. Margin minus 50 pixel, 0 pixel, and 15 pixel. Font size 0.9 em, color white, display flex, and justice content spaces between. Refresh the page. Now you can see the color change. And now come back to CSS file again. Class name dot forget and subclass label and input field. Label and input. Okay, just margin right 3 pixel. Now label a tag, color white, and text decoration none, and just some hover effect. You can see the color is blue. Now I can change this color also and white, so we use the hover effect for this time. Text saturation underline. Now you can see the color change. Okay, could design the button. Now let me check what is the class name. Now first we can add the class btn. Now copy the btn, replaces here the class name btn for the work smoothly. Width 100%, height 40 pixel, border radius 40 pixel, color white, border none, outline none, cursor pointer, font size 1 em, and font width 600. Now you can see the button change. Now you can copy the register class, font size 0.9 em, color white, text align center, center, and margin 2 pixel left right and 0 and 10 pixel. Now you can copy the register class, paragraph, and encoder. Text decoration none, color white, and font width 600. Now again the copy the class all and with hover effect for the hover effect. Text decoration underline. That's all. Now you can see all things are beautiful and designed. Now we can transparent this all page. First of all, we go back to the section and background image, use a background image. Now simply you are change the background color and type here URL
and just name background.jpg and now repeat it. You can see the background is changed. Now come back to the form box, change the background transparent and border RBGA to 255, 255, 255 and 0.5 and border radius 20 pixel. And okay, now you can see they have no border, 2 pixel solid. Okay, now you can refresh the page. You can see the our login page is complete now. Hope you can enjoy this video. अब यहाँ पे जो रिस्ट्रिक्शन थी वो सारी रिस्ट्रिक्शन भी देखें अप्लाई यहाँ पे हो रही हैं। आपको वो कह भी रहा है फिल आउट द फील्ड। अगर मैं इसको यहाँ से रिमूव करके मैं सेव करूँगा तो यहाँ पे आप एक ऑप्शन आएगी जिससे वो हमें बताएगा कि आप पहले अपना कोई डेटा यहाँ पे फिल करें, उसके बाद आप ओके पे लॉगिन पे क्लिक करेंगे। रिमेंबर मी का चेक भी अगर मैं लॉगिन करूँगा तो वो मुझे यहाँ से ऑप्शन देगा। जैसे मैं यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिखता हूँ तो वो मुझे आगे से एरर दे रहा है कि आप ईमेल टाइप करें यहाँ पे ईमेल, क्योंकि यहाँ पे ईमेल आप टाइप नहीं कर रहे। तो जैसे ही मैं ईमेल अपनी यहाँ पे टाइप करूँगा तो ये जो एरर मैसेज है वो रिमूव हो जाएगा। उम्मीद है आप दोस्तों को आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको लगे आपके नॉलेज में इजाफा हुआ है तो काइंडली वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।